and the Manchester of East for its thriving textile industry, and now the largest cricket stadium in the world. I'm Shweta Shekhar, your host and moderator for Uttarakhand Global Investors Meet today, and we are thrilled to have you here today as we unveil the potential of Uttarakhand through various illustrious presentations and one-on-one discussions. Firstly, it's my honor and privilege to welcome the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, along with senior officials from Government of Uttarakhand. I would also like to warmly welcome the profound key industry leaders present here today and the media and press that have come here as well. I would now request Mr. Yatindra Sharma to honor Shri Pushkar Singh Dhami ji, Chief Minister of Uttarakhand, Honorable Minister of Finance and Housing, Shri Premchand ji Agarwal. Can we have Mr. Yatindra Sharma here, please? Honorable Chief Minister and Honorable Minister of Finance and Housing. Let's give them a big round of applause, people. Absolutely honored to be in the august presence of such wonderful leaders here today. Let's talk about Uttarakhand. Devbhoomi Uttarakhand, the land of gods, the state's snow-covered Himalayan peaks, peaceful landscape, and rich cultural traditions make this a preferred destination for tourists from all over the world. Government of Uttarakhand is working towards the Global Investors Summit that is to be organized on the 8th and 9th of December 2023. Uttarakhand is one of the fastest growing states in India with an advantageous location and proximity to the New Delhi and NCR. The state has abundant natural resources and a skilled workforce. We are a young state and we have been able to house several leading brands like Mahindra, Nestle, Tata, Patanjali, and so on. Not many know that we are the leading manufacturing hub in India and hold great potential across sectors like pharmaceuticals, auto component manufacturing, health and wellness, education, real estate, and more. Over the next few hours, we will be exploring the endless opportunities that Devbhoomi Uttarakhand has to offer. Today, we have assembled here to make lasting connections and celebrate this wonderful gathering of esteemed dignitaries as we embark on the mission to become an ideal destination for investors and investments. We thus pleasantly and humbly invite all the potential investors to initiate meaningful partnerships in achieving mutual growth and targets. मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारे मजमे की शान. आप सबका हार्दिक स्वागत है. May I please invite Mr. Yatindra Sharma, past Chairman, CII Gujarat, and Managing Director, KHS Machinery Private Limited, to please give us the welcome address. Let's give him a big round of applause, people. Very good morning. Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister of Devbhoomi State of Uttarakhand, Shri Premchand Agarwal ji, Honorable Minister of Finance, Government of Uttarakhand, Shri Sudhanshu IAS, Principal Secretary, Urban Development, Forest and Environment, Shri Vijay Shankar Pandey, IAS, Secretary, Industries, Government of Uttarakhand, Mr. Rohit Meena, Director General and Commissioner of Industries, State of Uttarakhand, and Dr. A.P. Pandey, Senior Vice President of Century Pulp and Paper Mills, Aditya Birla Group. Industry leaders, ladies and gentlemen, it is on behalf of CII
as well as on my personal behalf, it is my immense pleasure and privilege to welcome you all to this iconic Global Investor Summit, which is going to be held by State of Uttarakhand in first week of December. We are equally delighted to have Shri Pushkar Singh ji on this particular moment where he has decided Ahmedabad as one of the destinations to come and present us the kind of wonderful, interesting opportunities of investment in state of Uttarakhand. And we are very much grateful and thankful to you, sir, for giving this opportunity to us. If we talk about relationship of Gujarat and Uttarakhand, it is very, very, I should say, symbiotic, inspiring, and also accelerating. Gujarat has got a very long history of entrepreneurship, and trade and industry has been in blood of Gujarati entrepreneur. But if we talk about industry, industry is combination of Lakshmi and Saraswati. But when we talk about Devbhoomi Uttarakhand, it has got a rare privilege in field of education, being an engineer. I remember way back, I am talking about 40s and 50s, one of the premier engineering colleges, there were 4 engineering colleges in India, and one of them was in Roorkee. That is the kind of legacy of Uttarakhand in terms of field of education. So point is that when Saraswati and Lakshmi combine together, the magic can be created. We are also having a very special place for state of Uttarakhand in northern region of CII, where we have been associated with Uttarakhand right from their inception, and we are participant in their vision and dreams right from beginning. While talking about Uttarakhand as a state, I mean, we all recognize Uttarakhand as Devbhoomi, but at the same time, it has got a huge contribution in national economy in field of automobiles, pharmaceutical, as well as education. And this is something which is very much on a very, very prominent level. But the Global Investor Summit, under dynamic leadership of Pushkar Singh ji, is going to take to the next level. And I am really looking forward to have more information from state of Uttarakhand, because right now the governance of India and particularly Uttarakhand is driven by double engine. One is dynamism of Chief Minister Shri Pushkar Singh ji and vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. So I am pretty sure that today whatever we are going to hear from them, it is going to inspire the spirit of entrepreneurship and also the killer instinct of Gujarati entrepreneurs to associate with state of Uttarakhand. With that note, I thank you all and welcome you again, and thank Shri Pushkar Singh ji, Shri Agarwal ji and all officials of state of Uttarakhand to come over here and be part of this roadshow which has been presented to us. Thank you very much. Thank you, sir. That speech was extremely inspiring, and we are now ready to start the day with a bang. Next, we have a keynote presentation. So I'd like to invite Mr. R.K. Sudhanshu, Principal Secretary, Urban Development, Forest and Environment, Government of Uttarakhand, to address the audience on investment opportunities and overview of sectoral policies. सबसे पहले तो आप सनु डेस्टिनेशन उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत छू। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, श्री यतेंद्र
Sharma ji, Shri A.P. Pandey ji, Shri Vinay Shankar Pandey, Secretary Industries, Shri Rohit Meena, and all the leaders from industries, ladies and gentlemen. Of course, it is pleasure and privilege both that we have got an opportunity to host a destination, Uttarakhand. But while prior to making presentation, one thing came to my mind: why industries should be coming to Uttarakhand? Why? I try to empathize. I try to think once, twice, thrice, and then the reply was here. The reply was here. The Honorable Prime Minister, not once, on several occasions, he has mentioned that the next decade is of Uttarakhand. Why so? Why so? Because the kind of a state Uttarakhand has, I think, needless to say, everybody is interested in coming to Uttarakhand. If we talk about Himalayas, if we talk about serenity, peacefulness, everything is there. So I like six ways in business or governance or management. There are 6 sigmas. So I have tried to categorize in a manner that for industries, for why destination Uttarakhand? Because we have P6, like 6 sigmas. One is place. I will come into details, and then of course place I already mentioned. Perception is equally important. Otherwise, there are stories because of bad perception. Actually, people or investors, they do not want to go to a place where other facilities are. Similarly, processes, then policies, and power is one of the major important things actually, which is important for investment. And last but not the least, patronage. So I will come one by one. If we talk about place, needless to say, what is Uttarakhand? If we talk about in terms of connectivity, it takes, be it a road. If we talk about road, it takes just 2.5 hours. Be it Kumai or be it Garhwal, both sides. In another, you can say 6 months time or 1 year time, we will be reaching, be it Haldwani in Kumai or Rudrapur or Kasipur, all the industrial estates, or in Roorkee. Yesterday, I was having a discussion with one of the industrialists who is having a setup actually there in Roorkee. So he was telling me that sometimes it takes 4 hours or like that. I told him, I assured him. मैंने कहा कि देखो अब लगता होगा भले 4 घंटे लगता होगा, but it's a matter of time. Within 6 months of time or 7 months time or maximum 1 year time, you will be reached from your place in Delhi to Roorkee in just less than 2 hours of time. This is our major this thing. If we talk about rail connectivity, yes, it is one of the best. We have Vande Bharat, we have Shatabdi, we have all, even for Kumai or for Garhwal, we have good rail connectivity, and so is the air connectivity. Again, I told you, if we talk about law and order, Uttarakhand again is considered to be one of the most peaceful state actually in the northern India. Niti Aayog's SDC ranking shows that in peace, justice, and strong institutions, rightly said one of my predecessors, categorically mentioned that even some 30-40 years back we had institutions like IIT Roorkee. Now we have more than 20 universities. We have skill development centers. We have IIM Kasipur. We have private universities, and if we talk about in terms of schooling, both Kumai and Garhwal, they are doing fantastically well. If we talk about Dune school, lot many students I have seen, they are coming all the way from Gujarat to Dehradun to send their children to study there.
Similarly, I can say that growth, manufacturing, employment in last decades, it has doubled, tripled, or like that. And if, in terms of demographic dividend, 70% of the workforce is there of the total population. So 15 to 35, if we talk about the demographic dividends, HDI, as compared to the other northern states, the HDI is much higher in Uttarakhand. So be it a skilled labor force, be it other other type of human skilled labor force, workforce, Uttarakhand has everything. Again, perception. How perception? I will not go through all the details. Perception is a culmination of many things actually, which is achieved over a period of time. I, while talking to many industrialists or friends from industries, they go to a place. First, they study. First, they evaluate that how is the perception of the state under the able leadership of our honorable Chief Minister. He is going all the way actually from Chennai to Dubai to London, and he, more importantly, he is ready to listen to everybody anytime. Even yesterday, day before yesterday, couple of days back, there was a meeting regarding vigilance. So he categorically mentioned that the complaints what secretaries are not getting, the director of vigilance are not getting, that people can directly send it to his phone, and so this is the that's how the perception is created. Policies, we have whole lot of policies, sectoral policies. Again, I will not go into details, but we are ready to customize it. That is very important actually. If somebody is coming and providing employment for more than 500 people, so our Chief Minister has categorically mentioned that तुम इसको कस्टमाइज करो और उनकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से करो. And we are ready to customize policies as per the requirement of the industries. Again, that is one of the major things actually, why one should be coming to Uttarakhand. And of course, we have mega industrial policy, MSME policy, tourism policy, drone policy, IT policy, film policy. Film policy, again, I would like to mention here that ever since the state came up with film promotion policy, shooting policy, every day we are getting actually requests from all over the country. So one of the Hollywood movies was being shot there. So, and processes, of course, industry requires while setting up, it requires a whole lot of, it undergoes a lot of processes. So, but we have developed a single window system, and it is monitored at the level of the Honorable Chief Minister and the Chief Secretary as well, once a month. And timeline has been fixed. And second thing, because if industry is set up and so the workforce and all actually they are going to reside there, and their citizen-centric services, they require services, public service delivery system. I would like to mention that Apni Sarkar has been rated one of the best actually in the entire northern state, and I think more than a million actually issues have been resolved through this Apni Sarkar. So we have a single window system, transparent land allotment system, citizen-centric services through online portals, and of course power is important. Just last line I would like to mention here that even if during summers when there is a shortage of power, the state purchases power at the rate of 28 rupees per unit, but at the same time provides power to industries
at the rate of 5.5 rupees. This is a big thing actually. This is called patronage. And of course, last but not the least, I will narrate a story here. One of my friends again was invested some huge amount of money to set up their industry, but again he started to have a lot of problems there. Tried to contact the authorities. So but in just I think 3 months of time, his industry was shut down and he had to go somewhere else. So there was a huge loss unless there is a patronage. And I told you that it is monitored by at the level of the Honorable Chief Minister and at the level of the Honorable Chief Secretary on a monthly basis. So patronage is equally important. And because of the patronage, I would like to mention that our legacy is such actually. I think name a few actually, because industry like Ashoka Leyland, Tata, Mahindra, AIS Glass, and a whole lot of industries are already there and thriving. Yesterday I was talking to again one of the industrialists who came from who has a unit in Roorkee. So I asked him. He was telling me that Gujarat wanted to attract the investment actually what we were planning to, but आखिर हमें करना क्या है? हम अब इस तरह से करना चाहते हैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हो उससे एक सुख मिले, प्लेजर मिले, ब्लिस मिले. वाई सो? उनका कहना है कि अब हमारे पास पैसे हैं. तो मुझे अचानक याद आया कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वाधनम मापनोति धनात धर्मम तथा सुखम. कहने का मतलब यह है, जैसा प्रेडिसेसर ने कहा कि हरिद्वार में इंडस्ट्री लगाना, आखिर पैसा आपके पास नॉलेज है, विद्या ददाती नॉलेज एंड एलिजिबिलिटी कैपेबिलिटी, और उसके बाद आप जब एलिजिबिलिटी आ गई तो आपके पास पैसे भी आ गए, पैसे आ गए तो अब उसके बाद आपको धर्म करना है, धर्म करना है तभी आपको ब्लिस की प्राप्ति होगी, सुख. उसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम, गंगा, इससे अच्छी मानसखंड, इससे अच्छी क्या जगह हो सकती है. इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि डेस्टिनेशन आप अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम 4 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. एंड आपको हम इम्ब्रेस, वी आर रेडी टू इम्ब्रेस यू. You have to show your intent. Thank you very much. Come to Uttarakhand, destination Uttarakhand. Thank you. Thank you very much, sir, for enlightening us with your insights today. We truly appreciate your dedication to address this wonderful audience, and it was absolutely motivating. I think he deserves another round of applause. May I now please invite Mr. Rohit Meena, Director General and Commissioner of Industries, Uttarakhand, to speak on investable projects. Can we give him a big round of applause, please? Good afternoon, everyone. I'm sure the kind of energetic presentation which you all have seen just now only, it tells about that why we are talking about Uttarakhand. I'm sure you must have observed that we are having a tagline of Destination Uttarakhand. Destination means Uttarakhand is going to be the destination of all kind of investments as well as for all kind of the people itself. So that is what we are talking about. And our tagline is peace to prosperity. Yes, our major strength. There could be a number of incentives which anyone can provide, but the kind of the ecosystem, law and order which we are talking about, that is the best in the country. So as far as Uttarakhand is concerned, we are saying that we are future ready and we have sustainable investment destination location in Uttarakhand. So when I'm saying future ready, and at the same time we are saying destination Uttarakhand, we are trying to pose this question to each one of you that we have prepared all the policies. Almost 27 plus policies are prepared right now in last 3 to 6 months itself at a war level effort itself. With such kind of scenarios, now we have also done your hard work, which you have to put up in case if you are putting up the investment anywhere in the country. But when you are talking about Uttarakhand, we have created a land bank of close to 6,000 acres and have created more than 200 plus investable projects which can digest investment in tune of around 75,000 crore. So that is kind of preparedness which we have done. So that is why we are calling it
Destination Uttarakhand. So I would be just giving a bit of the glimpse of the projects, major projects in the coming next 7 to 8 minutes itself. So obviously when we talk about Uttarakhand, we all think about a snow-clad Himalaya location. The location which would be having the snow-clad for almost more than 6 months. So in such scenarios, obviously hospitality is our key sector. We have identified 3 locations in Uttarakhand. One known as Oli, second one Munshari, and third one is the Dayara Bugyal in Uttarkashi. All these 3 locations would be having the snow-clad Himalayas for more than 6 months in a year. That kind of location you cannot find anywhere in the country. When we talk about Gujaratis, I'm sure we all talk about that. Okay, they are extravaganza, they earn a lot, and at the same time they are looking for expenditure also. So we invite all of you not only for exploring, but at the same time we are asking you to put up your investment for these kind of ski infrastructure. I'm talking about a kind of a Switzerland in Uttarakhand itself. Next one is about hospitality project. We were just putting up a query here in this Hayat only that okay, what is the tariff rate at where we are staying? I think that's around 12,000 rupees for the medium class rooms. But when I talk about Uttarakhand, our standard room starts at 22,000 rupees. And the same Hayat I am talking about, the Hayat Dehradun only. And the occupancy would be in tune of around 70%. That is as good as any AeroCity is having anywhere in the whole world itself. So that kind of the business rationale I am talking about. And about the premiumness, Rishikesh is right now ranked #1 in the country in terms of the highest average tariff rate. So that kind of hospitality projects can be put up in Uttarakhand. We have identified close to 20 locations where a person can come out with a 3 to 5 star hotel with an investment with more than 200 crore plus. And at the same time, we have also identified 3 locations where we can come out with a tourism city kind of concept. One is at Patwa, that is next to Nainital, around 20 minutes before Nainital. Second one is at HMT, again on the foothills of Himalayas, next to Nainital only. And third one is the Tihri. Tihri, when I talk about Tihri, I'm sure you all must have seen the War movie. The introduction of Kabir Khan, Hrithik Roshan, that one was shot at that location only. It's such a location which would be having water body in a periphery of, with a periphery of around 30 kilometers. It's next to Goa only in that way. Northern part of, you are thinking about a Goa in northern part of India itself. So that kind of tourism location is available where we are not only providing capital subsidy but also providing ecosystem. Our capital subsidy does not have any cap in the tourism accommodation projects, and we would be providing capital subsidy in tune of around 50% without any cap. Then obviously when we come to Uttarakhand, I have stayed here for 2 years at IIM Ahmedabad only. We all have seen what kind of education institutes have come in Uttarakhand. So obviously we are also now targeting the education sector. When I talk about Uttarakhand, we have almost 49% contribution coming from the manufacturing sector. Now the next giant leap which has to come in the economy, that has to be in the service sector. So obviously when I'm talking about service sector, tourism is one of the key one, but we are also focusing on the education and health sector also. We are terming both of them as industry sector, as sector in the form of the industry itself, and we are providing capital subsidy in tune of around 25%. We are coming out with the 2 knowledge parks, one in extent of around 400 acres at Parag Farm. That's a 3,000 acre of industrial township we are talking about, where 400 acres would be given to various education institutes, 1,000 acres of industrial parks, and roughly 1,500 acres of greenfield township. So effectively we are talking about a full-fledged plant city of 3,000 acres. Next to Bareilly Airport, 1 hour, Pantnagar Airport, 15 to 20 minutes, and Jewar Airport, around 3 hours as an international airport connectivity. Along with that, we are also coming out with a greenfield Medicity in Dehradun itself. It would be a small Medicity, not a very larger one, but we are looking for players who can come out and create their specific projects of like 2,000 to 4,000 meters, and at a one location in a 15-acre parcel, we would be having all the major services being provided by major brands of this country. So that kind of Medicity we are talking about. We are also, when as we both, my predecessor as well as I both, we talked about the films which are being shot in Uttarakhand. One of the major opportunity which is available is about creation of the new studios in that location, so that the other films are able to come at the same time, and at the same time they are also able to process their film production also. Then obviously as we talked about that
I'm sure all of you must have heard about Doon School. So on the similar lines, almost if I rank top 15 schools of the country, out of them, 8 would be resided in Dehradun, Nainital and Mussoorie only. So almost 50% of the top 50% of the K-12 residential schools of this country belong to Uttarakhand. So that kind of ecosystem is available. People are charging in tune of around 8 lakh rupees per annum to around 12 lakh rupees per annum. So that kind of premiumness is also available, and we are looking for these kind of investments. We are giving a capital subsidy of around 25% for these projects. Then obviously when we are talking about Gujarat, we need to talk about the logistics and the infrastructure. I'm sure we all have heard about the PM Gati Shakti projects. So there are a lot of multiple private industrial parks we are talking about. We are not saying that the industrial infra need to be created only by the government. It can be created by the private players, and obviously they can create a more efficient ecosystem than the government also. So we are talking about a multimodal logistic park, warehousing projects and cold storage projects for agri supply chain across the whole state itself. So these projects are available with us. Then in renewable energy, in power sector, obviously hydro is our strength, but at the same time we are focusing on renewable power energy. I'm sure a lot of people here are exporters. They know the kind of credibility which 100% is renewable power sector brings when we are talking about the exports. So we have identified lot of projects which we have already bid out. You can have a look on our website and you can get a brief about that one. So solar projects, pump storage projects and hydroelectric projects are already on the bidding process. You can have a look on that one. Along with that, we are also talking about a lot of real estate projects. Like when you talk about Uttarakhand, environment, Himalayas, Gangas and connectivity and proximity to Delhi, that is our key strength about which we all are talking about from last 15 to 20 minutes itself. So one of the major segment, we all know that highest disposable income is always with the people who are retiring and who are in the age group of around 60 plus. And what is their need? They are looking forward for the better ecosystem, better environment and a bit of the connectivity along with the healthcare facility. These are the things which are prominent in Uttarakhand, and two of the major projects which have come up in the country, that one is senior citizenship Max Antara project. They are already being sold out, and then now LDCO has come out with another residential projects where they are selling villas in tune of around 10 crore rupees. So that kind of senior citizen residential projects are available on the foothills. At the same time, we are also talking about integrated administrative complex, the similar one which you have created at Gandhinagar. We would be shifting our major government offices to this location, and we are talking about a build, operate, transfer kind of a project. The project would be in tune of around 3,000 crore rupees for 15 years. Then the heritage redevelopment at Haridwar and Rishikesh, that would be another project which is coming on the lines of Ujjain. Lot of PPP projects will come along with the construction projects in this one. Then we are when we talk about the government colonies, we always talk about horizontal development, villas and all. Like all these constructions were done 30 years, 40 years back. Now they are old and dilapidated in the state. So in the, such scenario, we are talking about vertical growth where you can develop our, these government colonies. A portion of that may be given to us and rest may be sold in the private sector. So that kind of projects we have developed for the redevelopment of government colonies. And then we are coming out with the Greenfield Township at Kicha of around 1500 acres. It would be a 3000 acre full-fledged Greenfield city at one location. And we have posed it for the Greenfield city at Government of India also. And we are getting a subsidy of in tune of around 1400 crore rupees for development of this location. We are looking for master developer as well as for the other residential developers. So these kind of the projects which are available with us, because of the paucity of the time, I would not be going into the other details of the projects, and you can have a look on our website, that is Invest Uttarakhand website. You can have a look on all the policies as well as you can also give your intent of investment on that one. Our dedicated team will get in touch with you. They will give a point of contact to you, and we would be in touch with you all the time. I'm sure, as my predecessor told about different policies and all, I have given a brief of about investable projects. Now I'm sure we started with why Uttarakhand. You must be having an answer, and you should now have a question, why not Uttarakhand? Thank you. Thank you very much, Mr. Rohit Meena. I think it was an extremely extensive report that he has brought in. And next, I would like to have
a special screening of the state film that highlights every enthralling aspect of the state. Requesting the console to please play the video. A land of diverse cultures and breathtaking beauty, where traditions meet modernity. Within the mosaic of the nation lies Devbhoomi, Uttarakhand, the picturesque Himalayan state of India, with the tranquil temples, the mighty Ganga, and exhilarating adventures beckon you to explore its wonders. Uttarakhand has embraced its uniqueness as well as emerged as an economic powerhouse in the country. With proximity to Delhi NCR, Uttarakhand's well-connected road, rail and air infrastructure positions it as a strategic gem in the heart of India. The state embodies the essence of peace to prosperity. The peace of doing business is exemplified by a state-of-the-art single-window portal offering more than 200 services, attracting investments across various sectors like tourism, Ayush and wellness. Uttarakhand is home to top tourism destinations like the yoga capital Rishikesh, hill stations Mussoorie and Nainital, winter destinations like Oli, and top spiritual locations Char Dham and Haridwar. Together, they attract nearly 55 million annual tourists and offer abundant business opportunities in the areas of tourism, Ayush, and wellness. This has also helped the state become an appealing destination for hotels and tourism-related projects. Pharma. Uttarakhand boasts of over 300 pharmaceutical units, catering to 22% of India's generic drugs manufacturing. Health. Top healthcare facilities like Max Hospitals and AIIMS have a presence in Uttarakhand. Because of its pleasant weather and easy connectivity, the state has abundant opportunities for medical tourists to come and recuperate in the fresh air and pristine climate of Uttarakhand. Education. Apart from playing host to renowned elite K-12 residential schools like Doon School, Wellams, Sherwood, Woodstock, the state also has more than 21 private and 13 government universities like IIT Roorkee and GB Pant University. Food processing. Home to 4 agroclimatic zones, Uttarakhand's rich bounty of crops, vegetables and fruits have helped create a mammoth of around rupees 14,000 crore food processing industry in the state. Automobile. Uttarakhand has the biggest automobile industrial city in North India, Pantnagar, with major OEMs like Hero Motors, Tata Motors, Bajaj Auto, Ashok Leyland and Mahindra. Uttarakhand contributes to more than 10% of auto components manufacturing in India. Electronics. Helped by the immense presence of BHEL and Defense Electronics, the state has a highly evolved ecosystem for the electronics, EMS and OEM industry. Some of the major players are Voltas, Panasonic, Dixon. With a highly developed ecosystem for focused sectors, the state has given further impetus on the ease of doing business by reforming more than 2,000 business compliances. It has also developed world-class industrial infrastructure by hosting more than 10% of top industrial parks of the country. Currently, there are more than 30 investor-friendly tailor-made policies like tourism policy. Under the tourism policy, businesses are allowed up to 50% capex subsidy without a cap for hospitality projects and up to 100% capex subsidy without a cap for tourism products. MSME policy. Businesses qualifying as MSMEs get a capex subsidy of up to rupees 4 crore. Mega policy. For projects where investment is between rupees 75 crore to rupees 200 crore, get a power assistance up to rupees 1.5 crore per year for 5 years. Logistics policy. Businesses are subsidized 20% of the project cost up to rupees 32 crore. Service sector policy. To boost service-related businesses in the state, companies are allowed allotment of government land or capex subsidy. With 200 plus investable projects and more than 6,000 acres of government land bank, Uttarakhand is poised to take giant leaps in the golden growth story of the country. 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है।
This is the destination where businesses thrive in peace to prosperity. The world is coming here. Come to Uttarakhand. Let's build together. It was such an enlightening video, also very light, and you feel beautiful. I was seeing that, and I was feeling cold over here looking at the mountains. It was that beautiful. Next, today we would have among us some key investors who have been our growth partners in this journey and made significant contribution in employment and wealth generation in Uttarakhand. May I please invite Dr. A.P. Pandey, Senior Vice President, Century Pulp and Paper. Can we give him a big round of applause, please? Good afternoon. I bow down to the land of Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel ji. Honorable, dynamic, young, enthusiastic Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, the Finance Minister of Uttarakhand, Shri Premchand ji Agrawal ji, the bureaucrats, senior bureaucrats, investors, and press and media brothers. I am representing Aditya Birla Group, and so far whatever has been said was the government version, and I am just confirming that whatever has been said so far is beyond that. The Uttarakhand is the real place to invest. The Aditya Birla Group has been present in Uttarakhand since 1984. And as you are aware, that as a global conglomerate, Aditya Birla Group is globally present. Our almost 48 units are present in throughout the globe. And out of those, 2 major units, the Century Pulp and Paper and 1 unit of Ultratech Cement is present in Uttarakhand. So I can take, as an entrepreneur, as an investor, I can take the guarantee that yes, whatever has been said so far in the slides, it's beyond that. The government is supporting like anything. As an entrepreneur, I can take the guarantee that whenever we have any small or big type of problem, the government machineries, local authorities, everybody is 24 hours available to support the industries. That as a Aditya Birla Group representative, I can take the guarantee. The presentations, so nicely and so beautifully deliberated. It's a place where you must visit, invest in Uttarakhand, and take the enjoyment of the place, the land of Devtas. That is why it is called as Devbhumi. We are present since 1984. Our unit is located in Lal Kuan. There is a place, Lal Kuan, in Nainital district. And I take this pride to speak on behalf of the Aditya Birla Group and Century Pulp and Paper that whenever, if we talk in terms of raw material availability, because we are in paper manufacturing, we are basically in paper, tissue and multi-layer board manufacturing. So the raw material is wood and bagasse. So the raw material is available in Uttarakhand and nearby areas in abundance. The place, in each and every place in Uttarakhand is well connected logistically through air and by road also. And a lot of good work has been done. There is a lot of chain work of good road transportation
the 4 lanes, the 6 lanes, and sir was very rightly saying that from Roorkee to Delhi there will be hardly 2 hours to reach. And Roorkee is the place which is very adjacent to Haridwar, the holy place Haridwar, and the capital Dehradun. The logistics, the raw material availability, the power availability, as the, sir was very rightly saying that even this period, even if there is a shortage of power, sometimes the government is making it available at a reasonable price to the entrepreneurs. And that is the very big support from the government. And under the leadership of Dhami sir, we are happy to say that every industrialist will be happy to invest in Uttarakhand. The second thing is that the peaceful industrial atmosphere. Every industrialist wants that there should be some government support, there must be the people around, there should be the peaceful atmosphere in the state, because there is a very logical question that why people should invest in Uttarakhand, and that is the only reason. If the peaceful environment is available at the state, everybody would be happy to invest in the state. I could see the good connection between Gujarat and Uttarakhand, as very rightly said by the sir in the beginning, that in Gujarat the people are largely entrepreneurial behavior they have got, and Uttarakhand has got all the facilities where they can invest and they can prosper. So we invite on behalf of Aditya Birla Group also, as a government representative also, and on behalf of the entire Uttarakhand state, that you must visit, you must see to the place, and you must invest in the Uttarakhand. The local body of CII, I'm thankful to Lambaji also, that the CII is doing a very positive role. And Sir Sharma Sahab was also saying that the Gujarat has got a connection with Uttarakhand, and that special connection would certainly give impetus and positive current to the people of Gujarat, and they will certainly come to Uttarakhand and they will invest in Uttarakhand. Last but not the least, I belong to Banaras, the Kashi, and I'm happy to say that the global leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is my member of Parliament, and he is from Gujarat, but he represents my constituency from Banaras. So I, on behalf of the entire country, I request all of you to convey this message to other entrepreneurs who may not be available in this hall, but the message must go on within the people, within the community, within the all the entrepreneurs, that yes, this is the place, this is the destination where we should come. The government is requesting, the entrepreneurs are requesting, we all will be there to support you. Please do visit to the Uttarakhand and invest in the Uttarakhand. And last but not the least, that Uttarakhand is also known as Devbhumi. So भगवान बद्रीनाथ की शरण में सभी को आना है, और भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ और 4 धाम आप पे कृपा बरसाएंगे, और भगवान बद्रीनाथ की कृपा से जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सर्टेनली आने वाले समय में, जैसा हमारे लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आने वाला डिकेड is certainly going to be the Uttarakhand decade. So Lord Badrinath, भगवान के चरणों में, मतलब एक जो उनकी वंदना है, पवन वंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम. तो आप उनकी शरण में आए और आपके उद्योग में, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, और उससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा,
और हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, जय उत्तराखंड। Thank you very much, sir. We're truly grateful to have had Dr. A.P. Pandey with us today. Your expertise and experience offer a unique perspective that is both enlightening and inspiring to many. I would now like to call upon on stage the Honorable Minister, Shri Prem Chand Ji Agarwal. Honorable Minister, Finance and Housing, Government of Uttarakhand, we eagerly await your address and invite you to enlighten us with your words, sir. Let's give him a big round of applause. बोलिए भारत माता की। मुझे पता है थोड़ा ठंडा लग रहा है, फिर भी बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात की पावन धरती पे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, तपस्वी, ओजस्वी और युवा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और यदि आप मेरी बात का सपोर्ट करें तो जोरदार ताली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप जरूर बजाएं। कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय यतिन शर्मा जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. सुधांशु जी, विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीणा जी, और अभी जिन्होंने बहुत सुंदर एक तरह से हमारे उत्तराखंड की गारंटी ली, हमारे आदित्य बिरला ग्रुप के आदरणीय ए.पी. पांडे जी, हरिंद्र गर्ग जी, और हमारे अन्य तमाम उद्योग जगत से जुड़े सम्मानित प्रतिनिधिगण, सम्मानित जन, हमारे मीडिया के साथी। सबसे पहले मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि आज जो हमारा देवभूमि, जिसमें हम सब जानते हैं कि 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और तमाम हमारे बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, मैं उस धरती से हूँ। और खुशी इस बात की है कि द्वारिकाधीश की धरती पे हूँ, और आपको बद्रीनाथ की धरती से नमन कर रहा हूँ, और द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका और हमारा उसी प्रकार प्यार, उसी प्रकार हमारा संबंध आगे खूब बने, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। भाई बहनों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य 2000 में बना, तब से लेके अभी 23 साल हमारे होने को हैं, और निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं कि ये राज्य अनेकों चीजों से बहुत, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोटेंशियल है। आप देखिए, बहुत सी बातें अभी हमारे आदरणीय आर.के. सुधांशु जी ने कही, रोहित मीणा ने कही, ए.पी. पांडे साहब ने कही। मैं इन तमाम बातों को अपने आप से जोड़ रहा हूं, और मैं कह सकता हूं इस 23 साल के अंदर जिस प्रकार से प्रगति हमारे उत्तराखंड राज्य ने की है, और चाहे आप किसी रूप में लें, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं कि आज यदि वहां पे अशोक लीलैंड है, हीरो मोटर्स है, अशोका के वहां पर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगी है, अनेकों क्षेत्रों में जिस प्रकार से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगी हैं, तो इसका कारण यही है जो भी ए.पी. पांडे साहब कह रहे थे। तो ये एक शब्द कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी इस काम की इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। आज हम सभी लोग, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोग आपके पास एक अनुरोध करने के लिए कि भाई हम लोग क्या हैं, उत्तराखंड राज्य में क्या क्या है, ये सब बात बताने के लिए यहाँ पे आए। और यकीन मानिए कि जो उद्योग कोई कहीं लगाता है तो मैं उसमें बहुत सारी चीज जो देखता हूं, उसमें 2-3 चीजें प्रमुख मानी जाती है। पहला माना जाता है कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। आज तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी कहा जाता था
कि साहब वहां जाएंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट सुरक्षित है कि नहीं है, लेकिन मेरे उत्तराखंड में मैं कह सकता हूं कि और दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरा उत्तराखंड इतना पीसफुल है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं। वैसे तो अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। अभी 30 तारीख यानी 2 दिन पहले मैं बद्री केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गया। गुप्त काशी एक जगह जहां मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, तो वहां एक 6 महिलाएं बॉम्बे से वो आई और एडवोकेट्स थी, अनेकों उसमें ऐसे थे जिनके शायद महाराष्ट्र में उनके सॉलिसिटर जनरल उनके पति थे। वो आई कि साहब आप यहाँ मंत्री हैं। मैंने कहा जी मैं यहाँ मंत्री हूं। उन्होंने कहा साहब मैं आपको बहुत बधाई देने के लिए यहाँ पे आई हूं, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूं, और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूं कि कितना खूबसूरत आपका उत्तराखंड है, कितना पीसफुल आपका उत्तराखंड है। साथ में उसने एक बात जोड़ी कि हम 6 महिलाएं सिर्फ यात्रा करने के लिए आई हैं, और पिछले 10 दिन से हम यात्रा कर रही हैं, और आप अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि हमें जरा सी तकलीफ नहीं हुई। यह है मेरा प्यारा उत्तराखंड। आप आइए उत्तराखंड, हम आपको आग्रह करने के लिए आए हैं, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। आप जानिए कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ आयुष वेलनेस हमारे यहाँ नीति बनी है, पर्यटन के लिए नीति बनी है, और जितनी भी चीजें अभी आर के सुधांशु जी ने, रोहित जी ने, तमाम मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई, इन सब बातों को देखते मैं कह सकता हूं, ड्रोन नीति की बात करें, फिल्म नीति की बात करें, ये इसी दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और इसी दौरान बनी है। इनका मैं धन्यवाद भी कर रहा हूं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से काम सरकार कर रही है कि अभी आप ये कह सकते हैं कि जैसा अभी माननीय थोड़ा सा दिखाया था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम देश का नहीं अब तो पूरे विश्व का एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में हम सब जानते हैं, और संयोग से धरती भी गुजरात की है जहां से वो आए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तराखंड के बारे में कहा था, एक बार नहीं 2-2 बार कहा, पहले केदारनाथ में कहा और अभी हमारे पिथौरागढ़ के अंदर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और इसीलिए हम आपके पास आए। आइए उत्तराखंड, इस दशक को जो माननीय प्रधानमंत्री, और ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उसका एक कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई मीनिंगफुल वो बात कहते हैं। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप लोग जिस प्रकार से हमारे यहाँ आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा उत्तराखंड वास्तव में बहुत ही जैसा मैं कह रहा था खूबसूरत है, और जैसे मैंने कहा कि पीसफुल है। पीसफुल के साथ साथ आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। अब आप उसमें जानिए रिटर्न क्या मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी लगती है कि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो देखना पड़ता है, तो उसमें लगता है कि उससे पहले क्या चाहिए, उसको बिजली यानी निर्बाध विद्युत आपूर्ति चाहिए। उससे अलावा क्या चाहिए, उसको जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट वो देखता है, और वहां मानव संसाधन देखता है। यानी कि ये सारी बातों को यदि मैं देख लूं, और अभी जैसा अभी यहां बताया जा रहा था कि देश से सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी का रेट मेरे उत्तराखंड के अंदर है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आइए, ये सारी चीजें हमारे उत्तराखंड में आपको मिलती हैं, तो क्यों ना हम उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करें। अब आप देखिए कि हमारा एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, अभी आप शायद हमारे शर्मा साहब उसका जिक्र कर रहे थे, वो IIT रुड़की हमारे उत्तराखंड में है। आप आइए, आप देखिए कि हमारा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है, हमारे पंतनगर में है। आप देखिए कि हमारे जो IIM है वो काशीपुर में है, श्रीनगर में है। यानी कि इस प्रकार से अनेकों चीजें आज, और अनेकों ऐसी प्राइवेट हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, ये कह सकते हैं एजुकेशन का हब है, इंडस्ट्री का हब है। यदि आप आ रहे हैं तो उसके नाते हमारे यहाँ हरिद्वार, पंतनगर, सेला कोई फार्मा का आज हब बनता जा रहा है। और इसी प्रकार से यदि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला तो मैं कह सकता हूं कि हमारे आने वाले टाइम पे हम सब लोग जिस तरह से हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे हम अक्सर कहा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, और मैं चूंकि एक मंत्री होने के नाते और अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार चल रही है, और जिस प्रकार से गति इस दौरान हमारी सरकार को मिली है,
तो उसमें मैं आज निश्चित रूप से आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। और एक शहरी विकास, वित्त, आवास, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं आपसे यही कह सकता हूं कि गारंटी शर्मा साहब ने ली है, रिकॉर्ड हमने दिखाया है, और आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और मेहनत हमारी युवा मुख्यमंत्री जी की है। तो क्यों ना हमारा ये उत्तराखंड में आप आए और आप उस उत्तराखंड में आके, जैसा आपके और हमारे उत्तराखंड के बारे में कहा कि ये देवभूमि है, और ऋषिकेश का जिक्र बार बार आ रहा था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, मैं ऋषिकेश से ही आता हूं और ऋषिकेश से मैं विधायक भी हूं। इसलिए मेरा विशेष आपसे आग्रह रहेगा कि ऋषिकेश उत्तराखंड जरूर आप आइए। और ऋषिकेश के नाते मां गंगे जो हिमालय से निकल के और धरती पे कहीं आती है, वो है प्यारा मेरा ऋषिकेश। और ऋषिकेश की उस पावन धरती से, जिसे हम योगा की कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल कहते हैं, और योगा का हब तो अब हमारा योगा का निर्माण, उद्गम, योगा प्रारंभ कहीं हुई है तो हमारे उत्तराखंड से हुई है। अनेकों ऐसी चीजें हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड से जनरेट हुई है। तो ऐसे उत्तराखंड में जरूर आए। और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते, चूंकि बोलने को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मैं तो सिर्फ इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ अभिनंदन करूं, आप सभी का अभिनंदन करूं। और चूंकि कल हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती थी, देखिए संयोग देखिए, कल हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे और गुजरात की धरती पर उनको प्रणाम कर रहे थे। ऐसे टाइम पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आप सबने मौका दिया। आप सभी का अभिनंदन करते हुए और आप सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए, भगवान बद्री विशाल, भगवान द्वारकाधीश और मां गंगे आप सभी पे कृपा बना के रखें। और गुजरात के बारे में, गुजरात वासियों के बारे में तो एक ही बात कही जाती है कि वो धार्मिक भी हैं, मेहनती भी हैं और काम के प्रति लगन वाले भी हैं। तो मेहनती लगन आपकी है, धार्मिक हम लोग हैं। आइए हम लोग मिले और हमारे उत्तराखंड को हम आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर, आपने इतनी मीठी सुरीली शब्दों में आपने इन्वेस्टर्स को इस स्वर्ण भूमि पर निवेदन दी है। हम सब खुशी खुशी आएंगे और हमेशा आभारी रहेंगे। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग स्पीच, द वे ही स्पोक। लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Thank you so much, sir, for shedding light on all these important matters. Address now by the Honorable Chief Minister. We have a special segment for our viewers. Without any further ado, let's welcome the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, to share his vision with all of us present here today. Let's give him a big round of applause. भारत माता की, भारत माता की। सभी को नमस्कार। अभी डेस्टिनेशन उत्तराखंड और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, उसमें अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास बहुत सारे विभागों का दायित्व है, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर KSS मशीनरी, और जिन्होंने शुरुआत में मेरा भी स्वागत किया, आदरणीय यतीन शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंचुरी बल्ब लिमिटेड, और जिन्होंने बनारस, उत्तराखंड, पूरे भारत की बात हम सबके समक्ष बहुत ही सुंदर तरीके से रखी, डॉक्टर AP पांडे जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रमुख सचिव श्री RK सुधांशु जी, विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीणा जी, विनोद अग्रवाल जी, MD अर्निया ऑर्गेनिक्स, कयूर जी, प्रेसिडेंट जाइडस, रिटायर्ड जस्टिस PP भट्ट जी, जयेश देसाई जी, आशीष देसाई जी, लांबा जी, एवं उद्योग समूह से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, उद्योग जगत से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं,
मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए, बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि के लोगों की ओर से मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और भगवान कृष्ण की धरा पर, द्वारिकाधीश की धरा पर, ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है और आज पूरी दुनिया को जिनके नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्मभूमि। तो मैं सच बताऊं तो वैसे आप सब लोगों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लोगों के लिए ये कोई शर्मा जी नई बात नहीं होगी कि इस तरह के कार्यक्रम होना। आप सब तो ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग इन सब कार्यक्रमों में आते रहे होंगे, ऐसे कार्यक्रम देखते रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भी जो है, जो उत्तराखंड के अंदर एक नई शुरुआत, वैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 में हमारा राज्य बना और लगभग 23 साल राज्य को बने हुए हो गए और इन 23 सालों में राज्य के अंदर औद्योगिकरण भी हुआ है, निवेश भी हुआ है और तेजी से जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस समय हमारे यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ था, इंडस्ट्रियल पैकेज, और उस पैकेज के कारण से भी बड़ी संख्या में खूब सारा निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई वहां पर और कई सारे सिटकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हुए। उसमें पंतनगर का सिटकुल, जहाँ के बारे में अभी बता रहे थे कि अशोका लेलैंड, महिंद्रा, ऐसे तमाम बड़े बड़े समूह वहां पर काम करते हैं। सितारगंज में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, अनेकों स्थानों पर, कई हजारों एकड़ पर, मैं कह सकता हूं कि 10,000 एकड़ के आसपास एकड़ पर इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हुई और अटल जी ने पैकेज दिया था, उसके कारण से आई। लेकिन फिर बीच के दिनों में, चूंकि आप सब जानते हैं, बहुत बार राजनीतिक सिचुएशन के कारण से भी चीजें आगे पीछे बढ़ती हैं और बीच में वो जो तेज रफ्तार से चीजें बढ़ रही थी वो कुछ देर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई और हमने अभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो आपने देखा होगा वाइब्रेंट गुजरात जब उन्होंने शुरू किया था, तो वो स्वयं कह रहे थे कि जो है बहुत कठिन उस समय होता था कि लोगों को लाना और जो उस समय सेंटर की जो सरकार थी वो सरकार भी सहयोग नहीं करती थी, बल्कि उल्टा कई बार उद्योग समूह के लोगों को यहाँ आने से भी रोकती थी। तो उस प्रकार की स्थितियां थी और हमने उन्हीं से प्रेरणा ली, उनसे मैंने मार्गदर्शन भी लिया। जब मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा कि मैं चूंकि उत्तराखंड के अंदर एक हमने बड़ा लैंड बैंक बनाया है, कई बार आप सब लोग सोचते होंगे जो लोग उत्तराखंड नहीं गए हैं या उत्तराखंड को जिन्होंने विस्तार से नहीं जाना है, उनको लगता होगा कि उत्तराखंड केवल पहाड़ है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति थी। मैं इससे पहले मद्रास गया था, चेन्नई में, तो चेन्नई में मुझे लोग कह रहे थे कि अरे आप तो इन्वेस्टर समिट के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए आए हैं, लेकिन वहां तो भूस्खलन हो रहा है, वहां तो सब धंस रहा है। मैंने कहा ये कितने पहले आपने ऐसा कहीं सुना? तो बोले अखबारों में छपा था, टेलीविजन पर दिखाया था। तो मैंने कहा इस बार उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम यात्रा हुई है, जिसमें गुजरात के लोगों का अधिकतम आना होता है, तो 4 धाम यात्रा में अभी तक 52 लाख लोगों से भी अधिक लोग आ चुके हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस साल का, जिस साल लोग कह रहे हैं कि ये धंस रहा है, शर्मा जी, पांडे जी, लोग कह रहे हैं कि भूस्खलन हो रहा है, वहां तो कहाँ इंडस्ट्री लगेगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है।
और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं जहां पर हमारे अनेकों संस्थान उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा इसमें यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना चाहिए। जब मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, लंदन गया और कई स्थानों पर ऐसे, अभी ये हमारा छठा आप सबके बीच में ये छठवां जो है औपचारिक रूप से रोड शो का कार्यक्रम है। और जितनी भी जगह में गया, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है। और आगे बढ़ चढ़कर जो लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी, तो लोग उत्साहित हैं आने के लिए। और वैसे भी देखिए, व्यापार एक ऐसी चीज है, निवेश करना। मैं बड़ी एक दिन गहराई से सोच रहा था और मैंने सभी अपने अधिकारी गणों से कहा कि जो भी लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है, वो एक बार निवेश करते हैं। उनके पास एक ही बार का मौका होता है, तो वो कौन सा स्थान खोजते होंगे? वो स्थान खोजते हैं जहां देखते हैं कि उनका ये निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका ये निवेश भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये सब सोचकर निवेश करते हैं। और व्यापारी जहां भी जाता है वो बहुत सोच विचार के निवेश करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि उत्तराखंड भविष्य की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमेशा के लिए, जैसे सनातन के बारे में कहते हैं ना, सनातन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। उस सनातन के साथ आप उत्तराखंड को जोड़ सकते हैं कि सनातन पद्धति को मानने वाला उत्तराखंड सुरक्षित था, सुरक्षित है और हमेशा जो है सुरक्षित रहेगा, हमेशा जो है भविष्य को आगे लेकर चलेगा। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं पिछले दिनों जब लंदन गया था, तो लंदन में मैं वहां के बहुत मंत्री समूह के लोगों से मिला, इंग्लैंड सरकार के। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन अंग्रेजों के बारे में हम सुनते आए, उन्होंने हमारे देश पर इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया, आज हमारे देश के अंदर जो लीडरशिप है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जो अभी अभी हाल में हमने G20 का यहाँ समिट हमारे देश के अंदर आयोजित हुआ, उस G20 के समिट के कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग छाप चली गई। पूरी दुनिया के लोग जिस सम्मान की दृष्टि से आज हमारे देश को देख रहे हैं, उसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? मैंने इंग्लैंड के 2-3 मंत्रियों से जब मैं मिला, तो मुझे सबने कहा कि आप लोगों ने तो बड़ा कमाल कर दिया, आपके प्रधानमंत्री जी ने तो गजब का जो है पूरी दुनिया को, देश का कोना कोना दिखा दिया कि पूरा भारत एक साथ समृद्ध होकर आगे बढ़ रहा है। एक साथ भारत की संस्कृति से लोगों को परिचित करवाने का काम, भारत की जो क्षमता है उसको दिखाने का काम, 200 से भी ज्यादा जो G20 के समिट के कार्यक्रम हुए, उसमें देश का कोना कोना देखा गया। पहले ये कार्यक्रम पहले भी होते थे, लेकिन पहले के समय में कार्यक्रम 1-2 स्थानों पर होते थे, दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया या कुछ और शहरों में हो गया और समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं बताऊं, गुजरात में तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन उत्तराखंड में भी 3 बड़े कार्यक्रम G20 के समिट के हुए।
लोगों ने जिम कॉर्बेट देखा, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट में से एक है, जहां आज 250 से भी ज्यादा टाइगर है, टाइगर सफारी करने आते हैं। लोगों ने ऋषिकेश नरेंद्र नगर को देखा, जहां माँ गंगा प्रभावमान है, हमारे प्रेमचंद जी वहीं से आते हैं। तो उस क्षेत्र को देखा और पूरी दुनिया के अंदर संदेश लेकर गए, और वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बने, और भारत के एम्बेसडर बनने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के भी एम्बेसडर बने। इस प्रकार का एक अनुभव ये सामने आया। मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि देखिए, जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, ये तो भगवान तय करता है। क्यों पांडे जी, ऐसा ही है ना? नहीं, कोई तय कर सकता है कि मैं पैदा कहाँ होऊंगा? कोई भी नहीं तय कर सकता कि मेरा जन्म कहाँ होगा। ये तो ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। लेकिन जन्म के बाद कर्म करना, जब सामर्थ्यवान हो जाए, सामर्थ्य पा जाए, अपने अंदर भगवान इतनी शक्ति दे दे, सामर्थ्य दे दे, तो उसके बाद कर्म करना। तो मैं आप सबसे कह सकता हूं, कर्म करने के लिए, आगे निवेश करने के लिए, उद्योग समूह में काम करने के लिए, व्यापार जगत में काम करने के लिए उत्तराखंड भी एक आपके लिए सेफ डेस्टिनेशन है, एक ऐसा डेस्टिनेशन है। और ये तभी होगा, देखिए, अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत भगवान को मानने वाला हूं, मैं ईश्वरवादी हूं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में, इस धरा में एक पत्ता भी हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो बिना ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अगर मैं आपके पास आया हूं तो मैं निमित्त बना, ये बना, हम लोग इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, आप सबको आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए कि आज आपसे मिलना, आप सबको आमंत्रित करना, ये भगवान ने ही तय किया था। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड आप क्यों आए। देखिए, बहुत लंबा मैं नहीं बोलना चाहता, आप सब लोग बहुत देर भी हो गई, और लगभग 1 घंटा, सुधांशु जी कितना 1 घंटा लेट हो रहे हैं, लगभग एक है, आधे घंटे डिले। देखिए, उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। कितने स्थान है जहां गंगा जी है, यमुना जी है, पिंडर है, शारदा है, महाकाली है, सरयू है, गोमती है, इतनी सारी नदियां लगातार प्रभावमान है। पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, आप जिधर जाएंगे उधर आपको पर्वतों की श्रृंखलाएं दिखेंगी। आप देखेंगे, हमारा जो राज्य है, हमारे फॉरेस्ट सेक्रेटरी भी हैं ये सुधांशु जी, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताई, जो मैं बता देता हूं, कि उत्तराखंड राज्य में 71% पूरे राज्य का जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है। मेरे ख्याल से भारत के सर्वाधिक होगा, बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। और मैं जब दुबई गया तो मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा था, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, और उनका जो वो कौन सी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें गए थे हम लोग, बुर्ज खलीफा। तो जब हम उसमें गए तो उसके अंदर तो एसी चल रहा था, और जैसे ही उसके बाहर आए थोड़ी देर के लिए भी, तो सबके चेहरे पर पसीना आ गया। तो मैंने कहा, ये सब देखिए, ये सब मैन मेड है, और उत्तराखंड में आएंगे तो आपको सब कुछ जो है गॉड-मेड मिलेगा। अंदर भी आपको टेम्परेचर अगर अंदर 22 हो रहा होगा, 24 हो रहा होगा एसी के कारण से, अभी बाहर जाएंगे तो आपको कहीं पर 10 मिलेगा, कहीं पर 5 मिलेगा, कहीं पर 15 मिलेगा। तो आप स्वयं लगा लीजिए। जो हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए तमाम लोग जो आते हैं, मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड से बेहतर स्थान नहीं है। और मुझे ये भी बताया कि जो अहमदाबाद से दिल्ली की, वो अहमदाबाद से जो देहरादून की फ्लाइट चलती है, वो फ्लाइट हमारे यहाँ की चलने वाली सबसे पुरानी फ्लाइट है। और मुझे तो लगता है कि अभी एक फ्लाइट चल रही है, हमको बहुत जल्दी निवेदन करना पड़ेगा भारत सरकार से, एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कि आप जो है उत्तराखंड में देहरादून से अहमदाबाद की 2 फ्लाइट चलाइए, 3 फ्लाइट चलाइए। धीरे धीरे कितने लोगों का आना जाना हो रहा है। और 4 धाम आने वाले लोग, सब लोगों ने देखा है किस तरह से उत्तराखंड बदल रहा है। सड़कों की स्थिति पहले कैसी थी, बाबा केदार का जो पुनर्निर्माण का काम है हमारे प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में हो रहा है। और एक बात और बताऊं, देखिए, प्रधानमंत्री जी
भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम करना चाहते थे। उस समय आपदा आई थी, लेकिन उस समय परिस्थिति नहीं बन पाई। 2013 में आपदा आई, ठीक 1 साल बाद वो प्रधानमंत्री बन गए और भगवान भोलेनाथ ने उन्हीं को मौका दिया, यानी कि अपने भक्त को मौका दिया। और आज केदारनाथ का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। आप 1-2 सालों के अंदर देखेंगे पूरा भव्य केदार और दिव्य केदार। बद्री विशाल का पुनर्निर्माण मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, केदारनाथ के लिए रोपवे बन रहा है और हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बन रहा है। देहरादून के लिए आज 40 से ज्यादा फ्लाइटें पूरे भारत के अंदर से लगातार चल रही हैं। और अभी अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम आने वाले टाइम पर 125 किलोमीटर की जो रेल यात्रा है वो पहाड़ों पर रेल से हो पाएगी। और इतना ही नहीं, अभी 12 अक्टूबर को पिछले महीने 12 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जहां आप सबको बताऊं कि हमारे यहाँ केदार खंड भी है और मानस खंड भी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अभी आदि कैलाश गए थे और आदि कैलाश बिल्कुल सीमांत क्षेत्र है। भगवान भोलेनाथ जहां विराजते हैं वहां पर पार्वती कुंड है और उसी के बगल में लिपू लेक है। लिपू लेक भारत का अंतिम कोना, सीमांत क्षेत्र। और लिपू लेक एक ओल्ड लिपू लेक है और अब नया लिपू लेक बन गया है। सड़क बन गई है, 200 मीटर सड़क बनाने के लिए 5 किलोमीटर का रास्ता बनाना पड़ा है। उस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आप सब लोग आने वाले समय में सड़क मार्ग से ही हमारे यहाँ से सीमा से, अपने इसी सीमा से, अपने देश की सीमा के अंदर से आप हाथ जोड़ेंगे, आगे को गर्दन उठाएंगे तो आपको कैलाश मानसरोवर दिखाई देंगे, उनके दर्शन होंगे। ये सब चमत्कार। और जागेश्वर धाम, पूर्णागिरी का धाम, हाट कालिका का धाम, ऐसे अनेकों, बैजनाथ धाम गुजरात के बहुत सारे लोग, मुझे अभी पिछले दिनों में एक दिन बैजनाथ के पास गया था, मैं भी सवेरे दर्शन करने गया तो 25-30 लोगों का एक दल, जिसमें सारे कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ नौजवान कम थे, लेकिन वो एक मिला जुला दल था। तो वो लोग, सब लोग मुझे देखा उन्होंने, मैं भी सवेरे आया स्नान करके, मैंने भी सोचा कि मैं जहां भी जाता हूं तो मंदिर के दर्शन करने जाता हूं या जो भी प्रमुख स्थान होता है वहां जाता हूं। तो जब मैं वहां जा रहा था तो मुझे देख के सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं उनके पास स्वतः ही चला गया। मैंने कहा आप लोग कहाँ से आए हैं? तो बोलो, उन्होंने बताया कि हम गुजरात से आए हैं और हमारा ये दल 15 दिनों के लिए उत्तराखंड आया है। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रुके हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम बैजनाथ आए हैं, बैद्यनाथ धाम वहाँ पर है अल्मोड़ा जिले में, अल्मोड़ा बागेश्वर जिले में। और बोले कि हम कौसानी में रुके हैं। और मैंने कहा कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी हुई तो आप मुझे बता दीजिए। बोले नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, हम तो पूरे टूर के साथ आए हैं और टूर वाले ने हमारा ये पूरा दौरा मैनेज किया है। तो मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि अब आने वाले समय में, अभी जैसे 4 धाम यात्रा है, तो 4 धाम यात्रा हमारी कुछ दिनों के लिए चलती है, 6 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। और ये जो उत्तराखंड की यात्रा है वो पूरे साल भर चलने वाली। हर दृष्टि से, माने कि आप उत्तराखंड आएंगे तो आपको चारों ओर कुछ न कुछ प्रकृति के रूप में, कुछ न कुछ मैं कहूं कि मौसम के रूप में, पर्यावरण के रूप में, हर चीज आपको प्राप्त होगी। अभी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, निवेशकों से हम लगातार बात कर रहे हैं। हमने नीतियों को, जो पॉलिसीज है, नई पॉलिसी बनाई है, जैसे इन्होंने बताया 27 पॉलिसी, मेरे ख्याल से अब ये 30 के आसपास हो गई है जो नई पॉलिसी हमने बनाई है। 30 पॉलिसीज बनाई है। बहुत सारी पॉलिसीज को हमने लिबरल किया है, यानी उनको संशोधित किया है। और ये संशोधन क्या है कि ये हमारे लिए नया अनुभव है। वो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बार इन्वेस्टर सबमिट कर ली हो। मैंने शुरू से एक कोशिश करी कि जिस दिन से मेरे को ये काम मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया, मेरी पार्टी ने मुझे काम दिया, उसी दिन से मैंने प्रयास किया कि उत्तराखंड के अंदर उद्योगों की एक बड़ी संभावनाएं हैं और हर प्रकार का उद्योग, हर प्रकार का निवेश उत्तराखंड में हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैंने कोशिश करी कि पहले दिन से जो हमारे यहाँ के चलने वाले उद्योग थे, जो पहले उत्तराखंड में चलते हैं, उन सभी से मैंने कम्युनिकेशन किया, उनको बुला के बात करी कि आप आइए, आप बताइए कि आपके क्या क्या सुझाव हैं।
जैसे मैं आज आपके बीच में आया हूँ, आपके बीच में से भी जो सुझाव मुझे मिलेंगे, जैसे दुबई गया तो दुबई में कुछ लोगों ने सुझाव दिए, लंदन में कुछ सुझाव दिए, मद्रास वालों ने अलग सुझाव दिए, अबू धाबी वालों ने हवाई सेवा के बारे में कहा कि हवाई सेवा होनी चाहिए डायरेक्ट, हम आना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जिनके भी जो सुझाव मिले, उन सुझावों पर हम अमल कर रहे हैं, अमल करके उसको अपनी नीतियों में ला रहे हैं, अपने कार्य रूप में ला रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोगों को आसानी हो। कई बार क्या है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है, वो सिंगल विंडो सिस्टम भी जो है हम चाहते हैं कि वो व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकली वो जमीन पर उतरे। उसके लिए मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ये सीखने की प्रक्रिया है, ये हमने इसकी शुरुआत की है और आप ही सब लोगों के बीच में से जो बातें आई हैं उन्हीं को हमने धरातल पर लाने का काम किया है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और इस संतुष्टि, ये हमारा मंत्र है कि सभी चीजों को सरल करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जो बेफालतू के जो है चीजों में रुकावट डालने का काम करते थे, उनको देश के अंदर पहली बार आजाद भारत के अंदर इतने सारों को हटाया है। उस प्रक्रिया को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए आज विकास की जो दौड़ चल रही है, उस विकास की दौड़ में इकोलॉजी और इकोनॉमी, ये इसका दोनों का बैलेंस रहे, इस फार्मूले को भी हम लगातार अपना रहे हैं। जीईपी में भी हमने प्रयास किया है। राज्य हमारा पहला राज्य है जहां पर जीईपी को हमने अमल में लाने के लिए उसको भी हम कार्य रूप में लाना चाहते हैं। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और लैंड बैंक अभी बड़ा बनाया है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि वैसे तो आप में से तो अधिकांश लोग उत्तराखंड आते हैं, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, लेकिन जहां नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 6000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक हमने बनाया है अभी वहां पर। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में अलग है, जो हमारे हिल्स में आएंगे, जो हिमालय की तरफ जाएंगे, उनके लिए हम और प्रोत्साहन की नीतियों को भी ला रहे हैं और अमल में ला रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है उद्योग लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उद्योगों के बीच में जो बहुत सारे क्लैश होते हैं श्रमिक वर्ग के बीच में, और जो मैनेजमेंट होता है, वो हमारे यहाँ नाम मात्र का भी नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र का नहीं है। और हमने कोशिश करी है कि हम इसको बिल्कुल बढ़ने भी नहीं देंगे। पीस टू प्रॉस्पेरिटी, और ये हमारा जो वाइब्रेंट गुजरात है उसी से प्रेरित होकर हमने एक काम किया है। तो मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए और सब आपको निवेश करने के लिए तो आमंत्रित करने के लिए आया ही हूँ। आप सबको मैं 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून के FRI में एक बड़ी मीट होने वाली है, उस मीट के लिए भी आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। और जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है, एक बार जरूर उत्तराखंड देखने आइए। आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी कि आप कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान इस भूमि से भी देश के लिए करें, समाज के लिए करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आया था। आप सबका धन्यवाद। Let's give him a big round of applause, people. सर, आपकी बातें सुनकर मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन दिल दिमाग आत्मा सब उत्तराखंड पहुंच गए। हाँ, बस मैं वेट आप सभी को सादर नमस्कार। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 के तहत आयोजित अहमदाबाद के इस रोड शो में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल सर, सुधांशु सर, रोहित मीना, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सभी आए हुए सम्मानित अधिकारीगण, CII के सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित विभिन्न उद्योग क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।
मैं इस मंच के माध्यम से एक दो बातें आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी आप सभी को बताया कि सर ने दुबई की भी यात्रा की, आबू धाबी की भी यात्रा की, सर चेन्नई गए, दिल्ली गए, अलग अलग रोड शोज हुए। इन सभी रोड शो में सर ने एक एक दिन का ही समय दिया। आखिर क्या कारण है कि गुजरात में जब सर आए तो कल सर की यहां पर आगमन हुआ 31 और सर कल जाएंगे, पूरा 3 दिन का वक्त दिया सर ने। इसके पीछे दो कारण है। एक तो सर का द्वारकाधीश की इस भूमि से अपार स्नेह और यहाँ की उद्योग जगत से उनकी अपेक्षाएं, इसके पीछे ये निहितार्थ है। सर को बहुत अपेक्षाएं हैं यहाँ से और हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इन अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे। आप उत्तराखंड आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा जो टैगलाइन है ईज टू प्रॉस्पेरिटी, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप उत्तराखंड जब आएंगे तो एक रामचरितमानस की बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है कि जाकर जापर सत्य स्नेहु सो तहि मिलत न कछु संदेहु। अगर आप प्यार से वहां आएंगे, विश्वास के साथ आएंगे तो ये मान के चलिए कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं होगी। सो तहि मिलत न कछु संदेहु, आपको कोई संदेह नहीं मिलेगा। आपको वहां से सरकार की तरफ से उतना ही रिटर्न मिलेगा और पूरा सहयोग मिलेगा। अंत में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और इन शब्दों के साथ विदा लेता हूं कि हम लोग 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में अवश्य मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your concluding remarks on today's gathering. I would like to express my heartfelt gratitude to all participants for their valuable inputs. I am sure there are many takeaways for everyone, and that today serves as a starting point for critical discussions and long-term partnerships and long-lasting relationships while we all strive together to take our exemplary mission forward. Thank you very much, guests. Rashtrapati sir. Jai Hind. सर ये 302 में आ रहे हैं अरुण भाई। That's why I say which batch. Okay. I did my Yes, Lucas भाई। खड़े जा रहे हैं। तो माइंड यहाँ करें, सेट करो ना एक जगह। सर जी पे आ जाए सारे लोग यहाँ करा दीजिए। अरे सुनो सुनो सुनो, ये नीचे रखवा दो, ये नीचे रखवा दो, ऊपर ही करवा देते हैं ऐसे करके।
नहीं ऊपर हाइट बढ़ जाएगी ना तो नहीं 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 यहीं पे करेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे। बोलो बोलो भाई मुकेश भाई हेलो।